She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper. हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में आई एम जस्ट गोना शो यू दिस प्रिटी लुक बाय यूजिंग जस्ट 4 प्रोडक्ट्स। यस, जस्ट 4 प्रोडक्ट्स और आप ये ग्लैम लुक पा सकते हैं इस फेस्टिव सीजन में। एंड दिस इज़ अ लुक विच यू कैन वेयर ऑन एनी फेस्टिवल और एनी इंडियन पार्टी, इंडियन वेडिंग। एंड यू विल लुक गॉर्जियस बाय यूजिंग जस्ट 4 प्रोडक्ट्स। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं देन just carry these 4 products and you'll be good to go. So आइए देखते हैं कैसे किया मैंने ये मेकअप लुक सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स यूज़ करके। So guys, आज के मेकअप लुक में मैं सिर्फ और सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स यूज़ करने जा रही हूँ एंड आई विल बी क्रिएटिंग अ वेरी फेस्टिव लुक विद दैट। और ऐसा लुक है कि आप दिवाली पे पहन सकते हैं या फिर किसी इंडियन फेस्टिवल पे पहन सकते हैं या फिर आप किसी इंडियन वेडिंग गेस्ट में भी इंडियन वेडिंग में भी पहन कर जा सकते हैं। लाइक ऐसा लुक होगा एंड आई विल बी यूजिंग जस्ट 4 प्रोडक्ट्स। एंड मेरी कोशिश होगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीटास्क कर सकूँ सभी प्रोडक्ट्स के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टेक फाउंडेशन। कोशिश कीजिए मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ कीजिए ताकि आपको कंसीलर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। सो आई एम जस्ट गोना टेक दिस फाउंडेशन। इट्स Maybelline Super Stay Better Skin Foundation. I don't think so it's available in India, but I got it from US and I am shade 30 warm nude. और I was preferring to use Milani foundation, but वो मेरी expire हो चुकी है. So yeah, I'm using this one. So I'm just gonna take a pump of this and let me know if you want to see a review of this foundation. So alright, I have the foundation here and I'm doing this talk through because I think कि I can connect with you guys better. So मैं इस तरह से I'm just gonna dab and make sure you have really nice skin prep before doing this makeup. And I'm just gonna apply all over my face और मैं blend करूँगी beauty blender से। And I'm gonna take my beauty blender. You can always use brush, it's totally up to you. I'm just gonna start blending. And I'm gonna also double it up as a concealer. इसीलिए प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आपकी मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन हो ताकि आपको कंसीलर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। एंड यू कैन ऑलवेज गो फॉर द मैट फिनिश फाउंडेशन बिकॉज उससे क्या होगा, आपका जो पाउडर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फेस पे बिकॉज आपकी जो फाउंडेशन है वो एज इट इज़ सेट रहेगी। एंड वट एवर इज़ लेफ्ट ऑन माई स्पंज आई एम जस्ट गोना take it to the neck. Guys, if I'm looking very white, it's because of the lighting, because in person this foundation looks good. कई बार lighting भी matter करती है. So I'm just gonna take a little bit of more just to conceal the areas जहाँ पे मुझे लगता है ज़रूरत है, like under eyes, because I really want to brighten these areas up. Also I'm just gonna put some of the foundation on my lid area because वो भी थोड़े मेरे pigmented रहते हैं. And also whatever is left I'm gonna put on the neck because neck थोड़ा पीछे है इसीलिए lighting उस पर इतनी अच्छी नहीं पड़ रही. That's why my face is looking a little white, but it's okay. I'm just gonna blend it really nicely. So foundation is our product number 1. So I will be counting कि मैं 4 ही products use कर रही हूँ. I'm not using any more products. Tools I might use more, like I am using blender, I will be using brushes. So tools मेरे ज़रूर ज़्यादा होंगे, but you can always use your fingers if you're new to the makeup. And I think I'm done with the blending and this is the finish of the foundation and I really love the finish of this foundation. Let me know if you want a detailed review because अभी तो ये इंडिया में नहीं है, but maybe in future it will launch in India. So my next product will be a brown eyeshadow जो कि जिससे कि मैं अपने eyebrows fill करने वाली हूँ. I'm just gonna take a small brush. I am not able to find my angled brush जिससे मैं normally अपनी eyebrows fill करती हूँ. So I am just gonna take a small brush, smudger brush. So इसी से मैं अपनी eyebrows fill करूँगी. So I'm just gonna zoom in a little bit. She got the posture of a superstar. She looks so fly. Alright, I have filled my eyebrows and it is looking too brown. So brown eyeshadow was my second product after foundation. So अब हम अपना third product use करेंगे जो कि है mascara. So I'm just gonna take my mascara. This is a Wet n Wild Mega Length Mascara and I'm just gonna go over my eyebrows very lightly just to set them. बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा
I have also done like a 3 products makeup tutorial and 5 products makeup tutorial. 5 products is a Indian wedding guest, so you can just go and check it out. And I have done like years before, and you must be thinking कि ये थोड़ी eyebrow light लग रही है. It's because you know I have my ring light here, and some of the light is reflecting from here, so ring light directly there है. That's why it's looking a little you know, lighter. And because of Kabir, I really can't shoot in the day. It is a little tough for me, so I shoot at night. रात में थोड़ा lighting का दिक्कत रहता ही है. Anyways, though I have like a ring light. Anyways, now let's just move to the eyes. So coming to our 4th and final product, which is the lipstick. So you can use any lipstick, but the shade should be like a पिंकिश नूड. सो इस तरह की लिपस्टिक ले सकते हैं आप, या आप इस तरह की लिक्विड लिपस्टिक ले सकते हैं. बहुत जल्दी सेट होने वाली लिपस्टिक हमें नहीं चाहिए. लिपस्टिक ऐसी होनी चाहिए जो कि थोड़ा टाइम ले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोना टेक अ लिटिल बिट ऑफ लिपस्टिक. आई एम जस्ट गोना टेक अ ब्रश, और हम लिपस्टिक से एक ट्रांजिशन शेड क्रिएट करेंगे अपने आईज़ पे. सो आई एम जस्ट गोना टेक अ लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं, ऑन द क्रीज, एंड आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट नाइसली साथ के साथ. So it will create a transition shade हमारी eyes के लिए. You need to be like really fast while doing it, because we really don't want कि ये set हो. आप creamy lipstick ले सकते हैं. I am using Maybelline liquid lipstick, liquid sensational liquid matte lipstick in the shade Sensationally Me Beautiful Lipstick. And उसके बाद you can take any fluffy brush and blend it more to have that really nice transition gradient. And I'm gonna do फटाफट से to the other side as well on the crease. and फिर से हम ब्रश लेके फटाफट से I'm just gonna apply. Alright, so हमारा crease color हो चुका है. Now we will go back to our brown eye shadow. चारों products मैं दिखा चुकी हूँ what I'm gonna use. So I'm just gonna take my brown eye shadow again, और इससे हम अपनी brown smoky eyes करेंगे. So I'm just taking this flat shader brush, and I'm gonna take a little bit of brown eye shadow. And I'm just gonna put the brown eye shadow I am using is by Makeup Peak in the shade Mocha, and I'm just gonna blend it with the crease color जो हमने lipstick से बनाया है. I'm gonna do it same to the other side. In those Gucci slides, yeah, I wonder what she hides under her disguise. And by taking the fluffy brush again, I'm just gonna blend the edges of the brown eye shadow. और ये जो है step हमारा जो crease color है उससे भी blend कर देगा हमारे eye shadow को. Gonna take a little bit of more fluffy brush, and I'll just blend any harsh edges अगर कोई होंगी तो. So that's the eye, but we're not done with the eyes. I'm just gonna take the mascara again, and I'm just gonna take the brush, a small brush. I'm just gonna take a little bit of the mascara on the brush, और मैं इससे अपनी eyes line करूँगी, but we will be like, you know, smudged look देंगे. We will not line like proper liner. So I'm just gonna apply a little bit here, very close to the lash line, and I'm gonna smudge it. You know, थोड़ी सी darkness आ गई है. I really don't think so कि it's very noticeable, but it will make difference in your whole look. And by taking the brown shadow again, I'm just gonna place it over the black, and I'm just gonna blend it to have that really nice smoky eyeliner look. Yeah. And all the girls around the world, they wanna be. Alright, we are done with the eyes. So I'm just gonna put mascara. अभी lower lash line भी करेंगे with the same steps. And I'm just gonna put mascara. Mascara वही जो हमने eyebrows पे use किया है, जिससे हमने थोड़ा सा liner smudge किया है. I'm just gonna coat my lashes really nicely. I'm not curling my lashes, but you can always do that. Alright, so now we will do the lower lash line. So I'm just gonna take the same brown, and I'm just gonna take to a smaller blending brush, and I'm just gonna smoke it out the lower lash line. I am not using any gradient color, तो मैं lipstick नहीं लगा रही नीचे. I'm just using that brown shade. पहले एक बड़े ब्लेंडिंग ब्रश के साथ करेंगे, एंड देन हम जस्ट गोना टेक अ स्मॉलर स्मजर ब्रश, जिससे कि हमने अपना लाइनर स्मज किया था, एंड आई एम जस्ट गोना darken it a little bit more. And yeah, that's it, and I'm just gonna apply the
mascara to my lower lash line as well. Lives a double life. Alrighty, so eyes are done pretty much, and now let's come to the face. So foundation हमने already लगा ली है. I'm just gonna use the same lipstick और हम इसे as a blush use करेंगे. I'm just gonna take some of the lipstick to the back of my hand. I'm just gonna put a little bit with my fingers and I'm gonna just blend it with the brush. आप blender भी use कर सकते हैं. But you really have to be fast because liquid lipsticks पैची हो जाती हैं, तो आपको थोड़ी क्रीमी लिक्विड लिपस्टिक लेनी पड़ेगी जो कि थोड़ा टाइम ले सेट होने में. एंड आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट अगेन. एंड अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्लश ज़्यादा हो गया, यू कैन ऑलवेज गो ओवर योर ब्लश विद अ ब्यूटी ब्लेंडर. ऑल्सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई लिटिल बिट ऑफ द ब्लश ऑन माई नोज बिकॉज इट लुक्स नाइस एज इफ यू आर ब्लशिंग. और यहाँ पे जैसे ज़्यादा हो गया, I'm just gonna take my beauty blender. Also I'm gonna contour, and contouring के लिए I'm just gonna use the same eye shadow जो कि eyes पे लगाया है, eyebrows पे लगाया है. And I'm gonna take a brush and I'm just gonna shape my nose. What's under the shadow smile? We'll never know. So you can see my nose is looking much slimmer than before. Also हम same shade से I'm just gonna contour. I'm using my blush brush only and I'm just placing right under the blush जहाँ हमने लगाया है, and I'm just gonna blend it with the blush like this. Can you see that? It looks really nice. Also if you have you can also define your jaw area with the same eyeshadow, and that's it. So now only thing is left is lips. So lips के लिए हम फिर से वही lipstick use करेंगे. So you have to choose a shade जो कि आपको तीनों काम में काम आए. आपके eyes में transition shade, a good blush shade and a good lip shade. So you can use the same lipstick. So I'm just gonna take the lipstick and I'm just gonna apply on my lips. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something. So the lipstick is done. So this is the whole look, and I'm just gonna wear jewelry and I'll be back. So this is the final look, and nobody can say that it is done with just 4 products, but it is done with just 4 products. And look how festive it is looking. And yeah, so I really hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर if you really want to watch more these kind of videos, please let me know in the comment section, and please do share it with your friends and family because it's so easy to do, and you just need 4 products. That's it, and you can just get this really pretty festive glam look by using just 4 products. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, then please do subscribe, help me grow, and I will see you guys in my next video. Till then, stay beautiful and stay healthy. Bye bye. That features you'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that